Hello everyone, Assalamu alaikum. Thanks for joining us. We are going to discuss today the utility maximization by Lagrange multiplier. So, what is basically we are going to perform? First of all, you know that what is the utility, and we discuss the concept of the indifference curve in the detail. अब हमें जो बेसिक चीज़ का सामना आएगा वो ये हमने देखा कि जब हमने बजट कंस्ट्रेंट पढ़ी थी, सो वी डिस्कस दैट इफ़ देयर इज़ अ टू गुड केस and we have a specific budget, let's suppose commodity X and commodity Y. So when we have the commodity X and commodity Y, so this is our basically budget line. Okay, so we discussed that if this is a budget line is equal to px x, py y. So this is basically two good case. So we may have the general budget line as well. और जनरल बजट लाइन में आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज पी एक्स वन कमोडिटी एक्स वन, पी एक्स टू कमोडिटी एक्स टू एंड अप टू पी एक्स एन एंड कमोडिटी एक्स एन. जब हम डे टू डे लाइफ के अंदर कंजम्पशन कर रहे होते हैं तो हमें एन गुड्स का सामना होता है. वी कैन नॉट से डैट कि एक बंदा 50 गुड यूज़ करता है, एक बंदा 30, एक बंदा मुमकिन है कि वो 500 गुड्स भी यूज़ करता हो या अप टू दिस नंबर कोई जो है कंजम्पशन कर रहा हो. सो वी मे आल्सो डिस्कस इन दैट दिस थिंग. सो एट दैट टाइम आवर बजट कंस्ट्रेंट कैन बी समेशन पी एक्स आई ओवर एक्स आई. So what is happening basically, this is our total budget line and we assume that this is our total expenditure because we are using the n goods and the prices of the n goods and the sum of the product of these things is basically total expenditure. जब तमाम प्राइसेस को उनकी कमोडिटी जो हम खर्च कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनको जमा कर लेंगे तो हमें बन जाएगा कि हमारा टोटल एक्सपेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइम कितना है. वी एज्यूम डैट कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है या तो आपकी इनकम के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, क्योंकि लेट्स सपोज इफ द समवन इज अर्निंग 1000 रुपीज़ इन ईच मंथ, सो एवरी मंथ he or she is earning 1000 rupees, so basically he can consume up to 1000 or less than 1000. so हमारी जो इनकम है वो या तो 1000 के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है. सो दिस इज बेसिकली द बेसिकली टोटल स्टोरी which says that what is the budget line, what is your income budget constraint. अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन. सो यूटिलिटी के लिए हमने बात की थी कि यूटिलिटी बेसिकली वी डिस्कस यूटिलिटी बाय द यूटिलिटी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन मेक्स द इंडिफरेंस कर्व. जब हम ये कहते हैं कि एक सर्टेन लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी टेकन, कैन बी रिसीव बाय यूजिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. सो बेसिकली द सेट ऑफ द डिफरेंट indifferent combinations is called the indifference curve, which gives the same utility. So two good case में जो utility है, let's suppose हमारे पास वो बन सकती है here like this. This is our utility curve U1 and another curve can be like this. This is the utility 2. This is the utility 3. So what is happening कि यही दो goods हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ किए जा रहे हैं और द कंज्यूमर इज रिसीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ यूटिलिटी. दिस इज कॉल्ड द U1. इंटरफेस मैप पे हमने देखा कि जैसे ही हम एक अगले यूटिलिटी कर्व पे जाएंगे, इंटरफेस कर्व पे जाएंगे, तो हमारी यूटिलिटी हायर हो जाएगी बिकॉज कि हम एट ऑल पॉइंट्स हम x और y के ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे होंगे. और हमने एग्ज्यूम में देखा था कि इट इज़ बेसिकली द रैशनल बिहेवियर. And then the monotonicity says that if you are increasing the consumption of the bundle, so you will get the more utility. So this is the indifference map और consumer के higher point पे higher indifference curve बनेंगे, number one. So what is the basically constraint? Constraint that के unlimited wants achieve नहीं हो सकती. So you have to have been restricted by your income, and when we involve the budget constraint in the utility,
सो दिस इज कॉल्ड द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। इस सिचुएशन में हमें नज़र आ रहा है कि जो कंज्यूमर है उसके 3 यूटिलिटी कर्व्स हैं, 3 इंडिफरेंस कर्व्स हैं, और इंडिफरेंस कर्व बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि कंज्यूमर U1 पे एक यूटिलिटी ले रहा है, U2 पे उससे ज़्यादा ले रहा है, U3 पे उससे ज़्यादा ले रहा है, लेकिन उसके पास जो लिमिटेड इनकम है और सोसाइटी में जो गुड्स यूज़ कर रहा है उसकी स्पेसिफिक प्राइसेस है, उससे उसकी बजट लाइन ये बन रही है। सो अगर कंज्यूमर U1 यूटिलिटी कर्व यूज़ कर रहा है, सो बेसिकली वो एक लेसर इंडिफरेंस कर्व पे है और उसके कॉम्बिनेशन जो हैं वो आइडियल नहीं है, ऑप्टिमल नहीं है, वो इससे भी ज़्यादा यूटिलिटी ले सकता है अपनी गिवन इनकम और प्रिवेलिंग प्राइसेस के अंदर। यूटिलिटी 2 हमें ये बात बता रहा है कि यहाँ पर हम इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन के साथ इस पॉइंट पे टेंजेंट कर रहे हैं, दैट्स मीन दिस कॉम्बिनेशन, यानी कि this x1 and this y1, यानी कि ये कोई, this is the number of the x that the consumer is going to be consumed, and this is a commodity y is going to be consumed by the consumer. So this combination within a given income will be the optimal, because कि वो अपनी इनकम में रहते हुए अपनी इनकम को भी फुल यूटिलाइज कर लेगा और एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे भी चला जाएगा, जो जैसे वो पहले U1 पे ले रहा था। एंड अनदर कर्व इज देयर द U3. U3 इज वेरी गुड फॉर द कंज्यूमर बिकॉज इट गिव्स द हायर यूटिलिटी, बट इट इज़ नॉट फिजिबल बिकॉज उसके लिए उसे इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो ही और शी इज़ गेटिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ कंस्ट्रेंट, सो वो यूटिलिटी कर्व 2 या इंडिफरेंस कर्व 2 के ऊपर अपने ऑप्टिमल बंडल अचीव कर सकता है। एक पॉइंट आपके जहन में यहाँ पर यह आ रहा होगा कि यूटिलिटी कर्व 1 में भी वो ऐसे बंडल ले रहा है जिसमें उसको बजट लाइन मिल रही है। सो बेसिकली ये इनएफिशिएंसी है। यही इनएफिशिएंसी हम डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, कि दिस इज़ द बजट लाइन एंड दिस यूटिलिटी कर्व इज टचिंग विद दिस इनकम, कि अगर वो ये बंडल ले तो इस बंडल के ऊपर भी एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्स यूज़ करेगा, सर्टेन लेवल ऑफ वाई यूज़ करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो U1 पे ही रहेगा, बिकॉज दीज टू कॉम्बिनेशंस इज आल्सो यूटिलाइजिंग द फुल इनकम ऑफ द कंज्यूमर बट गिव्स द सेटिस्फेक्शन लेवल U1। यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि हमें इन कॉम्बिनेशन से मच बेटर है कि वो एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाए विद इन द गिवन इनकम, और वो ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करे बजाय इस कॉम्बिनेशन के या बजाय इस कॉम्बिनेशन के। So these combination, that's why it's called the optimal combination. This is a theoretical consideration, theoretical discussion. Now we see that how the mathematically we can find this optimal bundle, and when we want to achieve this bundle, so we have to use the Lagrange multiplier, and Lagrange multiplier is a concept basically. What happens basically, if this is a two good case, so what happens, this is the basically graph, this is the x, this is the y, and कंज्यूमर जब इन दोनों को यूज़ करता है तो वो एक सर्टेन लेवल की यूटिलिटी ले लेता है। व्हाट इज हैपनिंग, कि आप कह रहे हैं कि कंज्यूमर ने कमोडिटी x इतनी यूज़ करी, कमोडिटी y इतनी यूज़ करी, तो उसे एक इंडिफरेंस का उसको एक सर्टेन लेवल की यूटिलिटी मिल गया। सो बिकॉज ये 3D कर्व है तो इसको पेपर प्लॉट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए समझ लें आप इसको कि लेट्स सपोज वो यहाँ तक आ रहा होगा x के ऊपर और यहाँ तक आ रहा होगा y पे, और वो एक ये उसका यूटिलिटी होगा, तो यहाँ पर वो एक कर्व आपको दे देगा कि ये पॉइंट हमारा है। सिमिलरली यहाँ पर जब हम आएंगे तो अगर उसने x इतना यूज़ किया और उसने y कम यूज़ किया, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो यूँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा, और ये एक पॉइंट आपको ये बन जाएगा। तो ये देखें आप, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल की
जो टोटल यूटिलिटी हम कहेंगे जो से इन दोनों गुड्स को यूज़ करके हासिल हो रही होगी, वो एक इस तरह का कर्व बन जाएगा। वी अज्यूम डैट कि ये कर्व जो है वो होता है कोसाई कॉनकेव, एंड कोसाई कॉनकेविटी की वजह से हमें जो इंडिफरेंस कर्व मिलेगा वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स मिलेगा, लाइक दिस, कि हमारा जो आईसी होगा वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा। ये दोनों हमने न्यूमेरिकल्स किए थे अपने लेक्चर में कि हाउ टू चेक द कॉन्वेक्सिटी एंड कोसाई कॉनकेविटी ऑफ utility function by the bordered Hessian methods. So we have to have previous knowledge to learn this lecture. इस सब के बाद हमें डिस्कस करना है कि if we have this utility function and we have this budget constraint, so how can we achieve this bundle? This is called the optimal bundle. So first of all, we will set up to the Lagrange multiplier, and Lagrange setup means utility function plus lambda will be multiplied with the total income minus summation xi and pxi. So this is basically जनरल फॉर्म ऑफ द Lagrange multiplier. इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम इसको आसान कर देंगे. व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली कि फॉर आवर केस वी हैव द यूटिलिटी फंक्शन इज x पावर 3/4 y पावर 1/4, ये उसका यूटिलिटी फंक्शन है, प्लस लैम्डा, एंड वी हैव इनकम m माइनस px x py y. So what we are going to discuss, this is the basically Lagrange setup for our specific case. Up we have three choice variable. One choice variable is lambda, second choice variable is x, third choice variable is y. हमें इन तीनों चॉइस वेरिएबल के साथ अपने इस इक्वेशन को डेरिवेटिव कराना है, जैसे कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव. एंड इफ वी यूज द पार्शियल डेरिवेटिव by using this equation with respect to the choice variable, so what is happening here, the partial derivative of this equation, so if we are using this term, so this is the power of the 3/4, तो 3/4 को हम बेस में उतार लेंगे, एंड द 3/4 minus 1 is equal to minus 1/4. This is basically the constant in when we are taking the partial derivative. So the y power 1/4 will be in the multiplication is the same thing. Now we come on this term. This term basically it becomes the three terms. If the lambda will multiply with the m, the lambda m, lambda px x, lambda py y. In all three terms, the variable x existing in the middle term, so remaining two terms will be the zero. और जब इस टर्म का लेंगे तो उसमें से x चला जाएगा और लैम्डा px हमारे पास रह जाएगा. By using the same methods on the same equation with respect to y, we will get this answer. And by using the same method with respect to the lambda, we will get this thing. Next step में हम इसको करने जा रहे हैं कि इक्वेट कराएंगे हम ज़ीरो के इन तीनों इक्वेशंस को. And this is the basically equation 1. This is the basically equation 2 and this is the basically equation 3. So solution ये कहता है कि आप कंपेयर कर लें equation 1 and equation 2 को. When you are comparing, so simple is that कि जो माइनस लैम्डा px है और लैम्डा py है, आप उसको ज़ीरो के उस तरफ ले जाएं एंड दोनों को हम डिवाइड करा लेते हैं. So what happens? 3/4 x power minus 1/4. Then by using the comparison method, so simply we will plug these two equations here and the lambda will be crossed with the lambda, and in the denominator we have the 4, so 4 can be cancelled out. So this is the x term, this is the x term, and this is the y term and y term. And we want to basically solve this thing.
So the 3 is the remaining and y is a 1 power 4, and if by using the indices method, simple, if we will convert to this y in the numerator to denominator to numerator, so the powers will be added, and 1 power 4 plus 3 power 4, जब उन तीनों दोनों को हम जमा करेंगे, so we will get just simple y, and 3 is here, and similarly there is x power 3 upon 4, and then when this x will go downside in the denominator, so the powers will be added, and then we will get the simple x. So this is basically the condition we got from the by comparison equation 1 and 2, and this condition basically will be solved for the both commodities, for x and for y. And if we will solve this situation for x, so we will get 3pyy px, and if we will solve for y, so we will get the y px x 3py. So finally, the final step is that these two commodities will be plugged in the equation 3. When you will plug these two equations into 3, so you will get basically the consumption bundle which is satisfying your budget constraint, and we will see that what will be our optimal points. Simply we are plugging these two equations in the equation 3, and equation 3 is basically we can say that the px x plus py y is equal to m, and first we plug with x to get the value of y, so px and 3 py y px plus py y is equal to m. So after plugging this, put this value of the x, we are very clear px will be cancelled out, and this is 3 pyy, this is pyy, so it will be the 4 pyy is equal to m. So very simple, m is your income, py is the price of the that commodity, so simply m over 4 py, this is your y commodity that you will consume in your given income, and this is called the optimal consumption of commodity y. Simply we are going to plug here the value of the x. So what is happening here, the pxx pyy is equal to m, and you are going to basically plugging the value of the y, so pxx is the same, and py, and y is pxx 3py is equal to m. So py will cancel out from the py, and then this final answer is pxx plus pxx over 3 is equal to m. So we will have to take the LCM, and if we are going to take the LCM, so it will be the pxx 3 plus pxx, and it will be a 3m. Finally we can say that 4pxx 3m. Now we are interested in value of the x, so it will be 3m divided by 4px. So this is basically your value of the x that you will consume with a given income and with respect to the price of the commodity x, and this is your consumption of the y. अब हम इसको एक चीज़ को चेक कर सकते हैं इजीली कि अगर हमारे पास ये यूटिलिटी फंक्शन है और हमारे पास ये बजट कंस्ट्रेंट है, और बजट कंस्ट्रेंट में हम टू कमोडिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, commodity x, commodity y, and the prices of the commodity x is equal to 60. So prices of the commodity y this, and your income is 12,000. So very simple, if this is the condition, तो कंज्यूमर कितनी कमोडिटी y की कंज्यूम कर रहा होगा, तो आप उसकी इनकम यहाँ रखें इस फार्मूले में 12,004, और उसकी प्राइस ऑफ x आपको मिली हुई है,
प्राइस ऑफ वाई मिली हुई है तो प्राइस ऑफ वाई रखें एंड वेरी सिंपल. So consumer is consuming basically 100 units of commodity Y, and what he is consuming in respect to the commodity X. So 3 M mean 12,000, and 4, what is the price of the X is equal to 60. So basically what is happening, 150. So the consumption bundle, the optimal consumption bundle will be कि उसकी अगर पास 12,000 रुपये उसकी इनकम है और 2 कमोडिटी वो सिंपल यूज़ करता है, उसका इंडिफरेंस कर्व अगर यूटिलिटी फंक्शन ये है, इंडिफरेंस कर्व ये है, सो वी मे से डैट कि हम ये एरिया, ये कंजम्पशन बंडल फाइंड करने में कामयाब हुए, एंड देन दिस कंजम्पशन बंडल इज बेसिकली 150, 100 within the given budget constraints. So I hope you learn about it, the utility maximization by the Lagrange multiplier. For more academic videos, please subscribe our channel.